ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 14. அசுரர்கள் சுக்கிரரை சேர்தல். ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச இதி சஞ்சிந்த்ய மனசா தானுவாச்ச ஹசன்னிவ வஞ்சித மத்ஸ்வரூபேண தைத்யா கிம் குருணா கில அகம் காவ்யோ குருஷ்சாயம் தேவகாரிய பிரசாதகः அனேன வஞ்சிதா யூயம் மத்யாஜானாத்ர சம்சயः மா ஸ்ரத்தத்வம் வச்சோஸ்யார்யாத்தாம் दाम्बिकोऽयं मताकृतिः अनुस्गच्छत मां याज्ञाः त्यजतैनं बृहस्पतिम् इत्याकर्ण्यवचस्तस्य दृष्ट्वा तौ सदृशौ पुनः विस्मयं परमं जग्मुः काव्योऽयमिति निश्चिताः. सतान् वीक्ष्य सुसम्भ्रान्तान् गुरुर्वाक्यमुवाचः गुरुर्वो वञ्चयत्येव मद्रूपोऽयं बृहस्पतिः प्राप्तो वञ्चयितुं युष्मान् देवकार्यार्थसिद्धये मा विश्वासं वचस्तस्य गुरु त्वं दैत्यसत्तमाः प्राप्ता विद्या मया शम्भोः युष्मानध्यापयामि तां देवेभ्यो विजयं नूनं करिष्यामि न संशयः इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं काव्यरूपधरस्य ते विश्वासं परमं जग्मुः काव्योऽयमिति निश्चयात्. काव्येन बहुधा तत्र बोधिता किल दानवाः बुबुधुर्न गुरोर्माया मोहिता कालपर्ययात्. एवं ते निश्चयं कृत्वा दशवर्षाणि सततमयं न शास्ति भार्गवः गच्छत्वं गुहकोपासीनास्माकं गुरुरप्युत इत्युक्त्वा भार्गवं मूढा निर्पत्सर्य च पुनः पुनः जगृहुस्तं गुरुं प्रीत्या प्रणिपत्याभिवाद्य च काव्यस्तु तन्मयान् दृष्ट्वा चुकोपात शशाप च दैत्यान् विबोधितान् मत्वा गुरुणा चातिवाञ्छितान् यस्मान् मया बोधिता वै गृह्णेयुर्न च मे वचः तस्मात् प्रणष्टसंज्ञा वै पराभवमवाप्स्यत मदवाज्ञाफलं कामं स्वल्पे काले ह्यवाप्य स व्यपाप्स्यत तदास्य कपटं सर्वं परिज्ञातं भविष्यति. व्यासोवाच इत्युक्त्वा सौ जगामासु भार्गवक्रोधसंयुतः बृहस्पतिर्मुदं प्राप्य तस्थौ तत्र समाहितः ततः शब्दान् गुरुर्ज्ञात्वा दैत्यांस्तान् भार्गवेण हि जगाम तरसा त्यक्त्वा स्वरूपं स्वं विदाय च गत्वोवाच तदा शक्रं कार्यं मया ध्रुवं शब्दा शुक्रेण ते दैत्या मया त्यक्ता पुनः किल निराधारा कृता नूनं यदत्वं सुरसत्तमाः सङ्ग्रामार्थं महाभागः शापदग्धा मया कृताः इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं मघवा मुदवा माप्तवान् जगृहुश्च सुरा सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पतिम्. संग्रामाय मतिं चक्रुः संविचार्य मितः पुनः निर्ययुर्मिलिता सर्वे दानवापि मुखासुराः सुरान् समुद्यतान् ज्ञात्वा कृतोद्योगान् महाबलान् अन्तर्हितं गुरुं चैव बभूवुश्चिन्तयान्विताः परस्परमतोऽचुस्ते मोहिता तस्य मायया सम्प्रसाद्यो महात्मा च यादोऽसौ हृष्टमानसः वञ्चयित्वा गतपापो गुरुकपटपण्डितः भ्रातृस्त्रीलम्बनप्रायो मलिनोऽन्तर्बहिः शुचिः किं कुर्मः क्व च गच्छामः कथं काव्यं प्रकोपितं कुर्वीमहि सहायार्थं प्रसन्नं हृष्टमानसम् इति सञ्चित प्रणेमुश्चरणौ तस्य मुनेर्मौनप्रतस्तदा भार्गवस्थानुवाचात रोषसंरक्तलोचनः मया प्रबोधिता यूयं मोहिता गुरुमायया न गृहीतं वचो योग्यं तदा याज्याहितं शुचि तदावगणितश्चाहं भवद्भिस्तद्वशं गतैः प्राप्तं नूनं मदोन्मत् धैर्मावमानजं बलं तत्र गच्छत सत्पृष्टा यत्रासौ कपटाकृतिः वञ्चकसुरकार्यार्थी नाहं तद्वत्ति वञ्चकः. व्यासोवाच एवं ब्रुवन्तं शुक्रं तु वाक्यसन्दिग्धया गिरा प्रह्लादस्तं तदोवाच गृहीत्वा चरणौ ततः
प्रह्लाद उवाच भार्गवाद्य समायातान् याज्ञानस्मांस्तथातुरान् त्यक्तुं नार्हसि सर्वज्ञ त्वत्तेतां स्तनयान् हीनः गते त्वयि तु मन्त्रार्थं शैलूषेण दुरात्मना त्वद्वेषमधुरालाभैः वयं तेन प्रवञ्चिताः अज्ञानकृतदोषेण नैव कुप्यति शान्तिमान् सर्वज्ञस्त्वं विजानासि चित्तं न प्रवणं त्वयि ज्ञात्वा नस्तपसा भावं त्यज कोपं महामते ब्रुवन्ति मुनयः सर्वे क्षणकोपा हि साधवः जलं स्वभावतः शीतं वह्नया तपसमागमात् भवत्युष्णं वियोगाच्च शीतत्वम् अनुगच्छति क्रोधश्चाण्डा यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजस्यस्मान् सुदुःखितान् त्वया त्यक्ता महाभाग गमिष्यामो रसातलं व्यासोवाच प्रह्लादस्य वच श्रुत्वा भार्गवो ज्ञानचक्षुषा विलोक्य सुमना भूत्वा तानुवाच हसन्निव न भेतव्यं न गन्तव्यं दानवा वा रसातलं रक्षयिष्यामि वो याज्ञान् मन्त्रैरविततैः किल हितं सत्यं ब्रवीमि यद्य शृणुत्वं तत्तु निश्चयं वचनं मम धर्मज्ञाः श्रुतं यद् ब्रह्मणः पुरा अवश्यं भाविनो भावाः प्रभवन्ति शुभाशुभाः दैवं न चान्यथा कर्तुं क्षमः कोऽपि तरातले अद्य बन्धबलायूयं कायो घात संशयं देवैर्जिता सकृच्छापि पातालं प्रतिपत्स्यत प्राप्तपर्याय कालो व इति ब्रह्माभ्यभाषत युक्तं राज्यं भवद्भिश्च पूर्णं सर्वं समृद्धिमत् युगानि दश पूर्णानि देवानाक्रम्य मूर्धनि दैवयोगश्च भीष्माभिः भुक्तं त्रैलोक्यमूर्जितं सावर्णिके मनो राज्यं पुनस्तत् भविष्यति पौत्रस्त्रैलोक्य विजयी राज्यं प्राप्स्यति ते बलिः यथा वामनरूपेण हृतं देवेन विष्णुना तदैव च भवत्पौत्रः प्रोक्तो देवेन जिष्णुना हृतं येन बले राज्यं भार्गवोवाच इत्युक्तो हरिणा पौत्रः तव प्रह्लाद साम्प्रतम् अदृश्य सर्वभूतानां गुप्तचरति भीतवत् एकदा वासवेनासो बलेर्गर्दभरूपभाक् शून्ये गृहे स्थितः कामं भयभीतशतक्रतोः पृष्ठच्च बहुधा तेन वासवेन बलिस्तदा किमर्थं गार्दभं रूपं कृतवान् दैत्यपुङ्गवः भोक्ता त्वं सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासिता तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैत्यराजो बलिस्तथा प्रोवाच वचनं शक्रं गोत्रशोकशतक्रतो यथा विष्णु महातेज मत्स्य कच्चपदां गतः तथाहं कररूपेण संस्थितकालयोग पीडितश्च तथा ह्यद्य स्थितोऽहं कररूपदृक् दैवादीनस्य किं दुःखं किं सुखं पाकशासन कालः करोति वै नूनं यदिच्छति यथा तथा भार्गवोवाच इति तौ बलिदेवशौ कृत्वा संविदमुत्तमां प्रबोधं प्रापतु कामं यथास्थानं च जग्मतुः इत्येतत्ते समाख्यातः मया दैव बलिष्ठता दैवादीनं जगत्सर्वं स देवासुरमानुषम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लादेन शुक्रकोपसान्ध्वनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।